This conference will now be recorded. Guys, EFS is our data storage. सर एक्सक्यूज मी सर Yes, Asank. आज रूल्स बताने वाले थे Roles I think so बता चुका हूँ. नहीं सर रूल्स अभी नहीं बताए थे Guys, last class में I think so मैंने roles बताए थे. पॉलिसी बताया था आपने, मुझे लगता है रोल बताना था आपको. कोई नहीं, रोल कोई नहीं, रोल ऐड कर देंगे हम इसमें. 5 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट. Now guys, the two things is EFS. The one is EFS and second is SQL. There are two services available. This is a storage account. And this is a database. The storage, it's connect with Linux only, and it's connect with anywhere, either Windows, Linux, and others. So now guys, for EFS use a protocol is NFS. Allow NFS protocol in security group. And for SQL, the allow Aurora SQL protocol in security. Now, the EFS is a region specific service. EFS is work within region and within zone. Connect with only Linux. So guys, Linux के लिए एक dedicated storage भी बनाया गया है, ठीक है, जो उसका नाम है EFS is a more secure because कि आप चाहो तो लाइक कि कहते हैं कोई dedicated platform यूज करना चाहता है, कोई डेटा स्टोर करने के लिए नहीं यूज करना चाहता है S3 स्टोरेज को. So now we also use the EFS, but EFS की the conditions है कि EFS connect with only on Linux. So now how to connect with EFS? I'm created two virtual machines. I'm created two virtual Linux machines. So now like the Linux 1 and now the Linux 2. But remember, like this is AP -1A zone, and now this created by AP South 1B. The always remember the EFS is a zone specific. Zone specific means that the EFS work within region. Like if you can use a Mumbai region, so like the EFS create in a Mumbai region as well as Linux machine is deployed in a Linux region. So either you can create a EFS is zone wise, like a one zone, like this is zone A and zone B. So now you can connect like this type, like a zone to zone, or either you connect a region wise, so you can connect for the every zone. तो सिंपल सा गैस कि अगर आप EFS स्टोरेज करते हैं तो EFS स्टोरेज को या तो आप पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करिए. तो अगर आप रीजन में जोन EFS बनाते हैं तो जितने भी जोन्स हैं वो सारी की सारी मशीन एक्सेस कर सकते हैं उस रीजन की. या अगर आपने क्या करा AP साउथ 1A में बनाया है और आपने ये भी क्या हुआ जोन A के अंदर बना दिया, तो ओनली द जोन A एंड जोन A इज कनेक्टेड विद ईच अदर. गॉट इट गाइस? So region का मतलब है the EFS work within region and within zone. So choice
कि आप दोनों चीजें सेम जोन के अंदर बनाना चाहते हैं। अगर आप EFS भी क्या क्रिएट करते हो, जोन ए में डिप्लॉय करते हैं, और सर्वर भी अगर आप जोन ई के अंदर डिप्लॉय करते हैं, सो इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। आइदर कि अगर आपने EFS बनाया है रीजन में, if you create a EFS storage in a region, or in this region there are the 3 zones are available. So now कि अगर आप region specific बनाते हैं, so the all other zones are connected with this EFS. Got it, guys? Everyone, is it clear? Yes, sir. यस सर। Any question किसी का? And SQL is simple database है कि डेवलपर्स को डेटाबेस चाहिए, तो आप डेटाबेस भी अपना क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं। So how to create database and how to provide a connectivity in the database. The database is connect for all. Either you can connect Windows machine, either you connect Linux machine, or any other machine. So I'm just create a machine and log in with portal and log in with account. Q to T P M Y. DC3F. And now guys, I'm just create two virtual machines. I'm just click on launch instance and I'm just select Amazon Linux T2 micro. Now deploy in zone A. Next, give the machine name is like LINUX Linux ZONE zone 1A. Now I'm deployed this machine in zone 1A. Next, security group, I'm allowed the existing security group, और either EFS के लिए जो guys protocol यूज होता है वो आपका यूज होता है NFS, network file system. So this protocol used for the EFS, but now I'm just select the existing security group, or either I'm create a new one. So I'm just create a new like EFS-SG, or in this security group I'm just allowed a SSH protocol, NFS protocol, और as well as कि मैं इसी मशीन को लिनक्स के साथ भी अटैच करूंगा, so I'm also allowed RDS के साथ, यानी कि डेटाबेस के साथ, so I'm just allowed Aurora the protocol name is MySQL Aurora. So this protocol for use for your database connector. So EFS hyphen SQL hyphen SG. Now the allow NFS allow EFS and SQL protocols. Or either choice is your, you use all traffic. Now I'm just give the custom anywhere locations. Now review and launch, and now create a select a .pp action key pair, and now create a key pair. So guys, in this point, I'm just create a one virtual machine. Now I'm create a one more virtual machine. Select T2 micro, then next, and now I'm deployed in zone B. Next, give the name is like LINUX Linux hyphen ZONE zone hyphen 1B. Security group, I'm select existing security group, EFS SQL, review and launch, and now select a key pair, launch. Now guys, I'm create a one more virtual machines.
Now the server 2012, select T2 micro, next, and deploy for the any reason, next, next. Now like a Windows server, next, select existing security group. So I'm select this existing security group is EFS, review and launch, and now select a Windows key pair. So guys, currently I'm just create 3 virtual machines. Now I'm just create a one more virtual machine, and this virtual machine is Windows. Now the EFS is provide a connectivity between a Linux machine, but SQL Server you can also connect the SQL Server with Linux machines as well as Windows machines. Got it the point, guys? Guys, is it clear? Yes, sir. Hello. So now I'm just created 3 virtual machines. How to create EFS is simply I'm just go to search in EFS, Elastic File System or File Share, create EFS, give the EFS name. So like I'm give the my storage. Select VPC, I'm select a VPC. So guys, मैंने जो अपनी मशीन बनाई है वो सिंगल जोन में बनाई है या मल्टी जोन्स में बनाई है? I am deploy my machine in a single zone or multi zone. Multi-zone, sir. तो which option select करूं मैं? मल्टी जोन अगर कम्युनिकेशन कराना है तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? रीजनल या वन जोन? Regional, sir. या डेफिनेटली गाइस कि अगर आपने डिप्लॉयमेंट करा है मल्टी जोन तो यू कैन सिलेक्ट रीजनल, और अगर आपने सिंगल जोन करा है तो यू कैन सिलेक्ट दिस वन और सिलेक्ट द स्पेसिफिक जोन. बट मेरी जो मशीन है वो मल्टी जोन है, दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट रीजनल एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट. Got it the point? But guys, remember कि when you create a EFS, the by default or you select a regional. So if you can select a regional, the EFS provide access for all 3 regions. So in a Mumbai regions, मेरे 3 zones हैं, zone A, zone B, and zone C. Now that this EFS, every zone can access this connectivity. But now कि my server deploys zone A, zone B, so now I'm remove a zone C. मैं क्या करूंगा? मैं नहीं चाहता कि सी में मेरा ये EFS एक्सेस हो, सो आप बाद में भी क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो जोन को. So like the by default I'm select a regional, that means it's communicate with all regions, as well as कि EFS जब भी आप क्रिएट करेंगे तो it's created on security group, और उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर NFS प्रोटोकॉल अलाउड नहीं होता है. तो अगर आप चाहते हैं कि तो आपको यहाँ पे क्या एक जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वो सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको अपडेट करना पड़ेगा. So how to edit network and how to update security group? It's simply you can just click on my storages. When you click and then click on a network, you can see the all 3 zones are available. Now you can click on settings, manage. Or when you click on manage, there's a no, I'm not deploy any in C, so I'm remove the zone. Got it, guys? It releases a default security group, but I'm using my own security group. I'm remove this security group and select this one security group, EFS SQL SG. So now I'm just adding my custom security group. Got it the point? And now save. If you create a database, so how to create a database? Guys, if you access a database, you can just search in RDS, Relational Database Service, RDS.
Relational database means is a SQL server. This is a SQL server. Now you can click. Depends on कि आपकी कंपनी कौन सा डेटाबेस यूज करती है. Either it's use Oracle, either you use MariaDB. So whatever, there are the n number of databases is available, like PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, ठीक है, Amazon Aurora, Microsoft SQL. So which operating system you use? But guys, remember कि when you create a SQL server, like you can select look like environment, can use a testing environment or production environment, like a database name, like you can get the database name, say they give the ICCP DB, and if the name is ICCP DB, the username of admin, the database login username is admin, you can change any name. Now the password, unset the password is like a password. The hardware size की what type the configuration you requirement कि आपका जो database है, अगर आप क्या configuration लेते हैं, like if you use a 32 GB RAM और 4 CPU, or either select a multi availability zones, यानी कि it's create a replica copy to another location, so you can select a multi availability zones. Now the public access, आप चाहते हो कि आपका जो database है, like these 3 machines are available in a cloud, like it's your system is available, like this is your home PC or either your company PC. You can see कि आप you can access the database in this machine also. अगर आप चाहते हो कि आपका database publicly भी access हो, like this is a public access. आप चाहते हो कि आपका डेटा public access भी हो, so now the by default the public access is no. So if I'm just click on yes, that means you can also access the publicly. After that the VPC, so I'm using a default VPC, or like I'm just using a security group. So now I'm create a one security group with the name of EFS SQL. Now the approximately cost of this database, so if you can see this each and everything I'm select, and now if I'm just click on a create, so it's give me the error, I think so, one something is missing. Amazon, okay, shit, guys, actions, I'm just delete how to delete this database. So multi-agent बनाया, so देखिए it's create a multiple location, but it's very costly, it's create a my big bill. मुझे create नहीं करना था ये. So गाइस, ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया था, मुझे क्रिएट नहीं करना था. सो इज इट अवेलेबल, एंड नाउ इट्स क्रिएटेड 2 रेप्लिका कॉपी इन 2 डिफरेंट रीजंस, और D2 5 एक्स्ट्रा लार्ज, सो ये बहुत ही तगड़ा बिल बनाएगा. सो एनीवेज, क्योंकि ये सब पेडेबल सर्विस, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस. ICCP, ओके, delete me. So I'm delete the replica copy. So just a minute.
मैं एक्चुअली गया आपको सिर्फ बता रहा था, बताने के चक्कर में मैंने क्रिएट रेप्लिका पे now the one instance is remaining. Actually, anyways, I'm just delete after some time. Now I'm just create again. I'm create a new database, and I'm select SQL. So guys, actually मैं आपको pricing दिखाना चाह रहा था. So now I'm just select MySQL, and you can select SQL or you can select like production environment, and database name is like ICCP-DB1, and now the admin and the default username is PAWSWORD password, and the PAWSWORD password. And now I'm just give the access like a DB instance type, like you use a DB instance type like a 32 GB or 8 CPU, or like you use a space, like if you need a 500 GB space for your database. So you can see the approximately cost. Where is cost calculation? It's not sure what happened. It's not show the cost calculations. So guys, ये calculation ना show नहीं कर रहा, otherwise it show the calculation. I'm just click on additional configuration, and now maybe it's show. तो ये आपको approximately बताएगा कि अगर आप इस configuration की services लेते हैं तो approximately आपका $1000 in a month bill बनेगा. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डेटाबेस बनाएं तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर लेना. दैट्स व्हाई अगर आपको टेस्टिंग पर्पस से लेना है तो यू कैन क्रिएट अ फ्री टायर. और अगर आप फ्री टायर सेलेक्ट करते हैं गाइस, तो फ्री टायर्स के अंदर वो आपको सिर्फ देगा T2 माइक्रो. द इंस्टेंस टाइप इज T2 माइक्रो, एंड इट गिव यू द 20 GB स्पेस ओनली. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो अगर आप यहाँ पे फ्री टायर लेते हो और फ्री टायर के अंदर भी ये आपको दे रहा है एडमिन एंड नाउ सिलेक्ट अ T2 micro. So it's give you the T2 micro, and it's give you the 20 GB space. Now I'm disable the auto scaling. Multi availability zones is available. So this option is hidden. अगर आप free tier लेते हैं तो आप multi zone में deployment नहीं कर सकते हो. Like the security group, you select a security group. So as a default subnet, if you give the public access, आप public access दे सकते हो अपने database को. Now EFS SQL, अगर आप अपना डेटाबेस का जो भी सिक्योरिटी ग्रुप है सिंगल जोन बना सकते हो फ्री टायर के अंदर. तो आइदर यू डिप्लॉय ए और बी, और यू ऑलरेडी नो कि सी के अंदर फ्री नहीं है. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ए कि मैं इसको जोन ए में डिप्लॉय करना चाहता हूं गाइस, एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट. तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आपकी यहाँ पर आ गई. तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं आ रही है, ये बता रहा है कि अगर आप फ्री टायर करते हो so in a 12 month, each calendar month the free tier will allow you to a 750 hours of Amazon on single instance. तो 750 घंटे आपके पास एक महीने में क्या है, फ्री है. क्लियर एवरीवन? ओनली 20 GB स्पेस इज फ्री. बट अगर आप इसकी पेड सर्विस लेते हो, वहीं पर ही पेड सर्विस आपकी अप्रोक्सीमेटली $500+ जाएगी. तो $500+ जाएगी. तो गाइस यू कैलकुलेट द प्राइसिंग कि आपका ईच महीने का कितना प्राइसिंग है. तो डेटाबेस अगर आप बनाते हो तो प्लीज डेटाबेस बनाते वक्त ये चीज ध्यान रखना कि इट्स नॉट अ फ्री. अगर आपको फ्री बनाना है तो आपको फ्री टायर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर. क्लियर एवरीवन? नाउ क्रिएट डेटाबेस. गाइस ICCP DB1 मैंने यहाँ पे बनाया है. नाउ आई एम सेलेक्ट दिस वन. So I'm just click on this actions and stop. Instant ICCP DB1 is not in available state. So you can stop a database for up to 7 days. If you are not manual start, your database start after 7 days, it will be automatically started. Okay. So I'm just click on this database.
and click on action, modify, and I'll just change the आप यहाँ पे इसका वर्जन चेंज कर सकते हो गाइस, डेटाबेस का कनेक्टिविटी आप चेंज कर सकते हो, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चेंज कर सकते हो, एड्रेस फील्ड में क्लस्टर्स आपका आ रहा है, तो ये आपका क्लस्टर ग्रुप है जो कि आपका वो सारी चीजें बनाता है, इनेबल डेलीगेशन प्रोटेक्शन, नाउ द कंटिन्यू, मॉडिफाई। तो दीज आर द टू डेटाबेसेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एक मेरा बन रहा है और एक मेरा पहले वाला है। एंड नाउ आई एम जस्ट गो टू द एक्शन एंड स्टॉप, और अब जाके मेरा डेटाबेस स्टॉप हो रहा है। तो डेलीगेशन ऑप्शंस मैंने इनेबल कर दिया था, तो इसलिए वो डेटाबेस मेरा नहीं हो पा रहा था स्टॉप। तो फेल टू स्टॉप डेटाबेस ICCP DB, नो प्रॉब्लम, अभी हम इसको कर लेंगे। बट गाइस क्लियर हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस? तो नाउ ये देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग स्टेट में है ये अभी। आफ्टर दैट यू रिमेंबर कि यहाँ पर मैंने एक और डेटाबेस कराया ICCP DB1, जो कि मैंने T2 माइक्रो MySQL का डेटाबेस बनाया है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कंपनी ऑरेकल डेटाबेस यूज करती है, आपकी कंपनी कौन सा डेटाबेस यूज करती है, तो आप वो डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देयर इज अ मल्टीपल डेटाबेसेस इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन, बट ध्यान रखना प्राइसिंग का कि आप वो सर्विस मत यूज कर लेना, क्योंकि अब इमीडिएटली आपका बिल बनेगा। तो यहाँ पे डिपेंड्स है कि आप कौन सा, बट MySQL के अंदर ही फ्री टायर का ऑप्शन आता है, अदरवाइज किसी और के अंदर आपके पास देखिए फ्री टायर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपके पास किसी और में फ्री टायर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। द फ्री टायर ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन MySQL। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? जसप्रीत, हरीश, शशांक, शिवम, विवेक, क्लियर है? Yes, Clear sir. है। Sir. Yes, sir. Now I'm just create a database. So I'm just click on dashboard, and guys, I've created two database and how to provide a database connectivity and how to provide EFS connectivity. So now the EFS की connectivity किस तरीके से करनी है, database connectivity आपको किस तरीके से करनी है, select and then click on stop. Zero instances is available, regional cluster, zero instance size, stopped. Delete options नहीं आ रहा, भी नहीं आया। तो गाइस एक्शंस में जाके डिलीट हो गए, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन माय डेटाबेस। तो ये डिलीटिंग, सो मैं अपना डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करता तो मेरे चार्जेस लगते, तो इसलिए मेरे को डिलीट करना जरूरी था। सो नाउ गाइस दिस इज एक्टिव डेटाबेस ICCP। नाउ हाउ टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी कि एज पर द डायग्राम आई एम क्रिएट अ EFS, I am create a one database. Now I am just created these three virtual machines. So now the provide, so first of all I am just provide the connectivity of EFS. So how to provide the key EFS? If you allow the EFS, you can install EFS. अगर आपको EFS कनेक्टिविटी करानी है तो आपको इन मशीन पर EFS इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आपको SQL की कनेक्टिविटी करानी है तो आपको SQL भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम है आपको इस लोकेशन पे भी
और अगर आप लिनक्स विंडोज पे अगर डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हो तो यू ऑल्सो इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर। और अगर आप ऑन प्रेमाइज पे एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका ईएफएस सेटअप इंस्टॉल नहीं है तो आप ईएफएस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद मशीन, आई एम क्लिक ऑन EC2, and now login with portal. One by one, I'm just login with all 2 Linux machines first of all. So I'm just click on zone A machines. Now the copy the public IP, go to Kute, SSH EC2-USCR user, select a key pair. Now okay. Then again I'm access another machine, SSH, copy the zone B public IP, paste. Then username is EC2-USCR user, and the default username is password is select a key pair. So now guys, this machine is a zone A, and this machine work in zone B. So basically I'm using this software for DevOps कि यहाँ पे मेरे को multiple servers बनाने होते हैं. Now the first sudo sudo su hyphen, now sudo su hyphen. Now you can install a EFS. So how to install EFS is simply I'm just going Google and NTDS util, so and type the EFS install in how to install EFS in Amazon Linux. So this is a command. So one command is required, guys. The yum install EFS utils, I think so. Yeah, this is a command. Sudo yum install -y Amazon EFS utils. I'm just copy this command and paste on this system. Now I'm just install a EFS for this system. So guys, as per the diagram, I'm just install a EFS for the both Linux machine. After that, you can create a one directory. You can create a one directory of this location. You can create a this directory of this location. Like I'm create a one directory with the name of this location is look like a name is Justpreet. And now in this location, I'm create a directory with the name of Vivek. And now I'm just connect this two directory with EFS. When the Justpreet create any file, like Justpreet create a file 1. So this file 1 is saved in this location, as well as this file show in this location also. Like a कोई common task है, so आप common storage multiple systems के साथ भी connect कर सकते हो, या either one of one. तो अगर आप कॉमन स्टोरेज मल्टीपल सिस्टम के साथ शेयर करते हैं तो कोई भी यूजर अगर कोई भी डेटा अपलोड करेगा वो सारे के सारे यूजर्स को दिखाई देगा, बिकॉज द डेटा सेव इन अ सेंट्रल लोकेशन. So now I'm just create a directory. Is it mkdir just Preet? Or now here in zone B machine I'm just create a mkdir just Vivek. So guys, I'm created two directories. After that, how to provide the connectivity of EFS? You can just simply you can go to the EFS, and when you go to the EFS, the option is available attach. And now you can copy this URL. So now you can just copy this URL and type
just right click on paste, and EFS, remove the EFS and add a name of Vivek. Now enter. So now this EFS storage is connected with Vivek. Same I'm repeat, you can go to come, paste, remove the EFS, or you can add a directory Justpreet. You can use your own directory name. So आपको अपनी directory का name करना है. Now I'm just go to the CD Justpreet, and Justpreet start the work like a TOUCH touch is create a one file INDIA India, second file like a US, or either is create a MKDIR is create a multiple directory like with the name of like songs, video, so like other. So like this all data, if you can see the LS, this all files deployed by the Justpreet in zone A, you can see that this all data is also available in zone B machine. Like you go for the CD Vivek and you can type LS, you can see the India songs, US videos, all files is available. Got it the point, everyone? Because we have connect a centralized database with this machine. Guys, clear the concept? So this is a shared drive. Hari, Jaspreet, Sasank, Shivam, Vivek, is it clear? सर नाम से अलग अलग रखा है डायरेक्टरी का, पर है वो कॉमन ड्राइव है, नाम अलग हो सकता है पर उसके अंदर कॉमन डाटा ड्राइव इसलिए है ना, नहीं नहीं देखिए कॉमन ड्राइव नहीं है, एक्चुअली क्या है मैंने कॉमन स्टोरेज कनेक्ट कर दिया है, तो डेटा आप इस डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे, वो इस डायरेक्टरी में नहीं, वो यहाँ पर सेव हो रहा है EFS पर। तो EFS के साथ मैंने सेम स्टोरेज से दो सिस्टम कनेक्ट कर रखे, तो इसलिए वो हर जगह दिखाई देगा शेयर ड्राइव। और हर सिस्टम पे चाहे उसका नाम अलग अलग रख दो। हाँ, नाम बिल्कुल चाहे अलग अलग, आप कोई भी नाम रख सकते हो, वो आप अपने ड्राइव की कौन सी डायरेक्टरी माउंट करना चाहते हो स्टोरेज के साथ। और आइदर अगर आप 1 of 1 देना चाहते हो तो यू क्रिएट अ मल्टीपल स्टोरेज। आप चाहते हो सिर्फ जसप्रीत अपना डेटा देखे तो आप सेपरेट स्टोरेज दे दो, आप वही URL से दूसरे से कनेक्ट ही मत करिए। क्लियर? Now the how to provide the connectivity with SQL. So now guys, अगर आपको SQL सर्वर की कनेक्टिविटी करना है, so now you can install a SQL. So first of all, I'm just install a SQL in a Linux. So the command is yum install install MySQL. So MySQL -y, and same as I'm just install here yum install MySQL -y. Now I'm install a SQL server, SQL setup, and now I'm just clear. Or after that, I'm just provide the database connectivity. So you can see that I'm provide the database connectivity. So now the how to provide, so you can use, can just go to the RDS. When your database is ready, you can click on the database, you can click on ICCP DB1, and it give you the one URL, and this URL is called the endpoint. You can copy this endpoint and type a command MySQL -u. U means username, और my database username is admin. जब मैंने database create करा था तो उस समय हम just put the database name admin -h. H means host name. So host name is I'm just enter a endpoint, and now -p, and now press enter, and the password is PASSWORD. This is my database password, or now I'm access the database. If you can see like a SHOW show data BASE base. So you can see कि MySQL database, but कोई अभी database नहीं है. So like you create a database, so like a CREAT, create database with the name of, like I'm just create a database with the name of ICCP Infotech, or like this one, or either you create a one more database like you create with the name of database like India. So guys, I'm created two databases. If you can see these databases, you can tap the command show databases. So you can see the ICCP Infotech database is available in this system of India. But
I'm just create this database in John B. Now I'm just available in John A, और now I'm just connect this system with same database. So जो database मैंने John B से बनाया है वो मेरे यहाँ पर भी दिखने चाहिए. Yes or no, guys? So like is MySQL -u is username is admin -h for the host name. Sorry, I'm just copy the again endpoint. And -p enter, and the password is PASSWORD password, and now SHOW show databases. तो गाइस यू कैन सी कि आपकी ये डेटाबेसेस यहाँ पर भी दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैंने सेम ही डेटाबेस इस सिस्टम पे भी कनेक्टिविटी करा दी है. बट यू कैन सी वन मोर थिंग कि जब मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था गाइस, तो यू कैन सी कि मैंने पब्लिक एक्सेस इनेबल करा था. नाउ अगर मैंने पब्लिक एक्सेस इनेबल करा तो नाउ आई एम जस्ट एक्सेस इन माय फिजिकल मशीन. दिस इज माय लैपटॉप, दिस इज माय पर्सनल कंप्यूटर, इट्स नॉट अ क्लाउड रिसोर्स. तो नाउ अगर आपको यहाँ पर भी ये एक्सेस करना है तो यू कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एज पर दिस सिस्टम. नाउ आई इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेरी हार्ड डिस्क भी अटैच नहीं है. I'm just a minute. I'm just download a software. 1 minute, guys. I'm just click. This conference will My now be recorded. WRK workbench. This is a software name is my workbench. SQL workbench. My workbench is SQL workbench. So download the SQL workbench software. Is it download my SQL workbench? And now click on download. गाइस किसी के पास पड़ा हुआ है SQL वर्कबेंच? तो गाइस ये यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है. और आफ्टर डाउनलोड, क्योंकि विंडोज के लिए ग्राफिक्स चाहिए, से ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही है. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन शो इन फोल्डर and install this MySQL Workbench software. So MySQL Workbench required a Visual C++. So also I'm just download a Visual C++. So पहले मेरे को Visual C++ install करना पड़ेगा. So now I'm just download the Visual C++. So I'll go to the back, download Visual C++. So you can also download the supporting software. This is the dependencies software. So download Visual C++. And now first time install this C++ software. So this is a dependency software. So अगर आपके सिस्टम पे C++ पहले से ही पड़ा होता है होगा तो गाइस फिर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. क्लियर द पॉइंट गाइस? सर एसक्यूएल योग से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो. तो मेरे पास SQL का कोर्स पड़ा हुआ है इस पर. देयर इज अ नो बिकॉज क्योंकि मैंने अपना सिस्टम अभी कुछ टाइम पहले ही फॉर्मेट करा है तो मेरे पास कोई भी SQL इंस्टॉल नहीं है. और टाइम ले रहा है. सो गाइस आप लोग अपना ट्राई करके देखेंगे. सो विजुअल स्टूडियो आपके पास अगर पड़ा होगा ये, so you can try for just wait. Now the
You must restart your computer before you can use software. Close it. Now install a workbench. If it's installed, yeah, it's working. Now install it. Got it the point, guys? Is it clear, guys? Now how to provide the connectivity of this? Same as you can just copy the endpoint. Protocol is 3306, already allowed in a security group. Guys, same as आप वर्चुअल मशीन पे भी करेंगे, तो विंडोज का तो कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी करिए. Yes, sir. Now just click on finish. And after finish, it launch automatically. And how to connect, just click on this plus sign, like AWS database, give the any name. In a host name, you can put a endpoint. The port number 3306, username is admin. And now store a values in password is password. Now click on OK. Then OK. And now click on this. So guys, अगर आपको वहाँ पे public access होगा तभी access होगा, तो now it's working. Or if you can type a command like a developer start a command like a show databases. Now execute this command. So show the ICCP info tag or India the bot database is display. Got to the point, guys? Now if the user create a database is like CREAT, create a database. The just play just now. And execute this database. अगर ये कमांड ठीक होती तो शायद डेटाबेस अपने आप लिख के आ जाता क्रिएट लिखने के बाद. नहीं आ गया था लिखा हुआ CREATE create नहीं आ रहा. database like hello India. So guys, जो भी databases की कमांड्स हैं वो आप देख लेना, मुझे कोडिंग वाला पार्ट नहीं आता. तो मेरे ख्याल ठीक थी, पीछे वो लगाना था कोलन या सेमी कोलन, वो ठीक थी शायद कमांड क्रिएट डेटाबेस. एक मिनट, अब आएगी CRE create database and give the name of database like chess colon and now execute. So I'm just create a database, or if you can see the database, so as HOW show databases, and now the execute this command. So you can see show databases colon. Command is running, but it's not sure the database is where. कहाँ गए भाई हमारे databases? Show database create just. No, they show the database. Yeah, here. This आ one. गया. Just. Clear, everyone? Hmm. So this is a way you can provide a connectivity between databases. So now what topic is finished is our EFS and SQL server. So how to create EFS, how to create SQL, how to provide the connectivity with EFS to the Linux machine, how to provide the SQL connectivity with EFS machine or Windows machine or like a on-premise virtual. Now guys, the important part is delete the database.
So if you are not delete, you know very well what happens. पता है ना guys? तो डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? So enough. So आपका या roles अभी बताऊं या कल बताऊं? Please reply. Enough, sir.